की खूबसूरती का राज क्या है? व्हाइट एंड व्हाइट थलाइवा हर जगह दिख रहा है. हेलो हेलो. Please raise your hand. We'll get the mics to you. सुनील जी आपके ठीक सामने. सुनील जी कहाँ पे है आपके सर? ठीक सामने. हाय. Guys, खड़े हो जाइए. बोलिए. Sorry, just before the question, I just want to say one thing. Uh, I couldn't have explained the how better. This is sheer magic, and thanks Percy, thanks for everything. अन्ना जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है धारावी बैंक के जरिए आपको. एक बहुत बड़ा नाम भी मिला है थलाइवा. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थलाइवा का मतलब ही होता है सबको प्यार करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, सबका गुरु, सबका भगवान. तो ये जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको थलाइवा, ये नाम मिला है आपको, कैसे देखते हैं आप एंड कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर इस थलाइवा इस अन्ना रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही हैं. हाँ जी. नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था. लेकिन जैसे हमने सब ने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी. और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है. राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है. और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चार खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है. तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली easier for me if I wasn't in a unit like this. ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता. लेकिन बाकी जो था फिजिकलिटीज़ थी, 3 घंटे 4 घंटे मेकअप का, वो सब तो हम वैसे भी झेल ही लेते हैं. लेकिन आई थिंक क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, मैं कहूँगा कि कंपैरेटिवली ईजी. लेकिन साथ साथ मेहनत बहुत रही, खास करके डिक्शन, बॉडी लैंग्वेज पर ये देखना. क्योंकि मेरे हीरोज़ भी ऐसे हैं जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसे स्टॉलवर्ड एक्टर्स हैं कि मुझे हमेशा ये दिमाग के पीछे रहता था कि यार कहीं गड़बड़ ना कर दूँ, कहीं मजाक ना बन जाऊँ. और मेरी पहली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वैसे ही मैंने कहा कि OTT की पहली, इसके पहले मैंने काम किया है, लेकिन साउथ में मैंने कुछ फिल्में की जो टेस्टिंग ऑफ वाटर्स थी मेरे लिए. आप ऐसे टेक्निकली देखा जाएगा तो 7-8 साल के बाद मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ. मैं खुद कहता हूँ कि ढंग का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ढंग का काम आया ही नहीं मेरे पास. ढंग का काम कर रहा हूँ. और जब वैसा काम आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी, कि मैंने अपने ऑडियंस को चीट किया था इसके पहले. ऑडियंस थी मेरी, मुझे प्यार आज भी उतना ही है. इंटीरियर्स में कहीं भी जाऊँ तो बहुत ज़्यादा प्यार है. लेकिन क्या वो टिकट्स में कन्वर्ट करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं गलतियाँ की थी. अब अगर मुझे उन गलतियों को सुधारना है, एंड आई हैव टू कीप देम हैप्पी, आई हैव टू डिलीवर समथिंग ऑफ क्वालिटी. एंड आई थिंक ये 4, 5, 7, 8 साल मुझे वो मौका मिला. पिताजी के साथ जो 4 साल मैंने गुजारे, मेरे बच्चों के साथ जो मैंने पैंडेमिक के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि पीछे हट के देखा मैंने कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है हमारी अपनी इंडस्ट्री में. तो आई थिंक आई वेंट बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड लर्न. एंड आई वाज ब्लेस्ड दैट आई गॉट टू वर्क विद द टीम like MX, a director like Sumit, the rest of the star cast. I mean, Vivek, every shot that he comes in adds so much value to Thalaiva, the family. मैं बार बार यही कहूँगा. और अगर इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी रहेंगे तो यही लगेगा कि ये एक ब्रोकन रिकॉर्ड है, लेकिन सच्चाई यही है कि इनकी वजह से Thalaiva का कैरेक्टर बनता है. And I'm blessed to get such a phenomenal opportunity, reach. मैं हूँ ही मास हीरो, अगर टिका भी हूँ तो मास के वजह से टिका हूँ. और ऐसी एक मास फिल्म सब्जेक्ट जब आती है तो इट मीन्स अ लॉट. एंड जैसे कि हम सब कहते हैं, कंटेंट इज़ किंग. फाइनली सिर्फ और सिर्फ कंटेंट एंड राइट प्राइसिंग चलेगा. एंड दैट इज़ व्हाट आवर इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ टू रियलाइज कि यंग टैलेंट पे यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी. जो टैलेंट है इसमें बहुत ही यंग टैलेंट है. और जब आप यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करते हो, आप कभी गलत नहीं हो सकते. अगर गलतियां हो भी गई तो बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, डिजास्टर नहीं होगा. आप दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप दोबारा खड़े नहीं रह पाओगे. आप
लड़खड़ाओगे लेकिन खड़े रहोगे. And I think this is the difference. जो commitment थी इनकी. आप सेट पे जा, धरावी का एक सेट भी लगा हुआ था, और अगर आप सेट देखते, मैंने समित और MX से ये भी कहा था कि इसको परमानेंट रख लो यार. I think the world will want to come and see what Dharavi is if they didn't get a chance to go to Dharavi. And the way they matched it, this is the commitment of Samit and his entire team. Every assistant is a genius, you know. बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी, बाद में बताऊंगा, लेकिन work wise they are absolutely brilliant. They work hard and they play harder. समित के साथ मेरा एक कंप्लेन है, मैं अभी बता रहा था विवेक को और पर्सी के साथ, कि पर्सी ने मुझे चॉकलेट नहीं दिए और समित ने मुझे इंटीमेट सीन दिया ही नहीं. तो थलाइवा अकेला बूढ़ा, लाचार नहीं था, फैमिली थी, नो रोमांस, नो गाना, बेचारा लुंगी पहना है फिर भी कोई इंटीमेट सीन. एब्सोल्यूट. Hello, Sunil and Vivek. My question is to you. You're right. Yeah. Hi, Shama Bhagat here. Okay. A lot of films and series, you know, are based on crime, and there's a lot of glorification of crime, and they're having the highest TRPs. So, what do you think attracts people towards such series or films that glorifies crime? It's not about glorifying crime. It's about the kind of layering that happens, black and white and grey. You like to see all these colors. They blend very, very, very beautifully. And there are stories to tell. And it's not about one individual, you know. Like Dharavi is not about one individual. It's about the family. You've seen Narcos, you love it. You love it because yes, it's intense. You want to understand ये दुनिया कैसी दुनिया है. लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर आप धारावी देखो तो थलाइवा वो एक आदमी है जो 15-20 साल से धारावी के बीच, बम्बई के बीचों बीच रहा है, और पुलिस और फोर्सेस उन तक नहीं पहुंच पाई. ये सच्चाई है. वैसा ही आप देखोगे तो पुलिस उनके प्रॉब्लम्स. सो जब आप इन सब को एक साथ पीड़ते हो एंड यू लेयर इट ब्यूटिफुली, यू गेट टू सी अ लॉट मोर. देयर इज अ लॉट मोर इंटेंसिटी, देयर इज अ लॉट मोर scope for performances. I think that's what excites people, and that's what looks good, because that's a lot of people don't belong to that world and they want to know more about that world, and probably that's why it's interesting. Shamaji, how are you? Very well, thank you. So I think, aside from what Anna said, I feel that in the narrative of Dharavi Bank, what has been very well achieved is कि एक तरफ जो सिनेमा है, it imitates life. तो ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं, तलाइवन जैसे ऐसी सिचुएशंस रही हैं, ऐसे गढ़ बने हैं. That has been represented. But why do you see only glorification of crime? You should also see the glorification of the Mumbai police force. You should see Jayant Gavaskar representing that man, determined man in uniform, willing to go to any length, give up anything for sacrificing anything to achieve his justice, right? To achieve that end goal of justice. So I think there's a balance in the narrative. I think there's a balance. There's one larger than life character, and then there's one guy in a uniform who has just made up his mind. And this is something that we've seen in real life also. We've seen this happen in real life time and time again. So I think Dharavi Bank, unlike the glorification of crime story, is a very interesting, very realistic and balanced storytelling. Hi, this is Komal Panchal from Indian Express. I have a follow-up question for what Shamaji asked. It's for Suniel sir and Vivek, both of you. While, you know, of course, I saw the first episode. And this is a kind of a trend where, you know, with a lot of OTT, there is this glorification of violence. I'm not only calling it crime. And the first episode opens with someone chopping a human body. So, you know, it's kind of, it does impact society in a very big way. So I want to understand from both of you how you look at glorification of violence on OTT content. I think we both answered the same question. You know, somewhere down the line, it's not about glorification, like Vivek said. In the first question, the answer was very generic. But if you talk about Dharavi, you'll see the entire reasoning. You'll see what the Mumbai police wants to achieve. You'll see how
Thalaiva himself, for him, his family, his people mean a hell of a lot to him. Probably what he's gone through in his life is something that he looks at it from that point of view. So there's definitely no glorification. There is definitely a balance in everything that has been shown. And somewhere down the line, like Vivek said, it's real life too. And there's a lot of that is being shown. No, I mean, I'd like to answer it in this way that you're from the news media. We've seen time and time again all over the world that there are people who became killers and serial killers or, did really violent things just so that they could be carried by the news media. Would you categorize that as glorification of violence? So it's just a representative of a representation in terms of what society actually is. And you're doing your job as the media to put that across, right? You're reporting it. Same way, we're trying to bring a mirror to society on screen. Is there no violence in our society? There is, right? So I think you can't sanitize cinema for saying that, oh no, there should be a moral code. I think if the moral code starts, then it has to be applied even to media. Then you can't show any crimes on TV. Why are you reporting it? Why is the headlines not a retired army officer donating his entire pension for educating kids, but the headlines are about a man chopping, his live-in partner into pieces? Why is that? So it's the same reason. No, and I guess you have to see the entire 10 episodes to decide whether it's glorifying it or not. I think that's what needs to be seen. You've just seen the first episode, and you put this question forward, which is very, very good. But I think you need to see the entire series to really